So, today we will talk about the deserts and the processes which take place inside deserts. So, if we overall look at the Earth's surface, we have around 26% of land which have dry climate. Other than that, if we look at the major desert regions, then those excuse me, desert regions can be classified as arid deserts, dry arid deserts, and semi-arid steppe climate. Semi means half, partially dry and dry. So दो तरह के desert या dry areas हमें मिलेंगे, एक completely dry और दूसरा partially dry, which means साल में कभी कभार वहाँ बारिशें हो जाती हैं सेमी एरिड एरियाज में, जबकि एरिड एरियाज में कोई एज सच रेनफॉल नहीं होती. नाउ desert climates, what are the factors which makes up a desert? So the factors or the spatial distribution are as follows. We have most of the deserts between 15 to 35 degrees of latitudes, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी और सदर्न हेमिस्फेयर में भी, दोनों जगहों पे जहाँ पर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सेल्स होते हैं. इफ़ यू रिमेंबर, these are the pressure cells which have high pressure, और हाई प्रेशर जहाँ पर होता है वहाँ पर बारिशें नहीं होती. So when there is no rainfall, then it will be a desert. और ज़्यादातर रीजन हमारे पास 15 to 35 डिग्रीज नॉर्थ एंड देन 15 to 35 डिग्रीज साउथ लैटिट्यूड पे ये एरियाज मिलते हैं. एंड देन रेन के लिए, डेजर्ट के लिए एक और फैक्टर है रेन शेडो एरियाज ऑन द ली साइड ऑफ माउंटेन रेंज. हर उस एरिया में जहाँ पे रेन शेडो एरिया होगा या लीवर्ड साइड या माउंटेन की वो साइड जो हवा को फेस ना करे, so that side of the mountain generally does not receive rainfall, and there are chances of having more deserts. And then deserts एक और जगहों एक और जगह पर पाया जाता है, that is the areas which are away from moisture bearing air, यानी कि समंदर से दूर जो जगह होंगी वहाँ पर भी deserts मिलेंगे. So these are the factors, or we can say that these are the locations where we have most of the deserts of the earth. रेन शैडो में और अवे फ्रॉम द सी, मॉइस्ट, क्योंकि समंदर की जो हवा होती है वो मॉइस्चर बेरिंग होती है, उसमें नमी होती है, वाटर वेपर्स होते हैं. तो जिन एरियाज जो एरियाज सी से दूर हों, दोज एरियाज डू नॉट रिसीव मॉइस्ट एयर, दे रिसीव ड्राई एयर, एंड दैट मेक्स द डेजर्ट्स. और दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया, और एशिया का जो सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल पार्ट ऑफ एशिया is has big deserts. ये फैक्टर्स हैं वर्ल्ड्स डेजर्ट्स लोकेशन के लिए. और नाउ वी विल डिस्कस द desert fluvial processes. If you remember the term from the last chapter, fluvial means related to water. So in the deserts, we can have some fluvial systems, or those fluvial systems in the deserts would be seasonal, of course. बारिशों के सीज़न में
वो स्ट्रीम्स भर जाएंगी और बारिशें ख़त्म तो वो स्ट्रीम्स खाली हो जाएंगी। ज़्यादातर डेजर्ट के फ्लूवियल सिस्टम्स या फ्लूवियल प्रोसेस इसी तरह के होते हैं। सो इफ़ द stream in a desert has water throughout the year, ये बहुत कम केसेस में होता है। लाइक रिवर नाइल विच फ्लोज थ्रू डेजर्ट, अगर आपको याद हो रिवर नाइल को एग्जॉटिक स्ट्रीम कहा जाता था, तो एग्जॉटिक मीन्स समथिंग विच डज नॉट बिलोंग टू दैट एरिया। सो नाइल की अगर हम एग्जांपल लें तो दैट इज पेरेनियल, परमानेंट, मुस्तकिल बहने वाला। सो very rare cases we have. And then the second example is the Colorado River in USA. वो भी deserts में से flow करता हुआ जाता है। So here are some of the examples of deserts. You see the Mojave Desert and the Takli Makan Desert. So that's in USA and this is in Central Asia. और ये हमारे deserts की major locations हैं। The light colored ones are dry, arid deserts, and the dark ones are semi arid steppes. Okay, so let's come back to the river types. Now you can see here Cape Verde. इसमें डेजर्ट पेवमेंट नज़र आ रही है, सैंडी रीजन नहीं है लेकिन ये है डेजर्ट। इसी तरह यहाँ पे भी उस तरह की मट्टी नहीं है जैसे हम डेजर्ट्स के बारे में सोचते हैं। So the fluvial systems, it can be perennial, permanent, flow करने वाला. It can be ephemeral and then it can be intermittent. So perennial is the permanent flowing river जो पूरा साल बहता है, उसमें पूरा साल पानी होता है. That is a perennial stream. And then the ephemeral stream flow only during the precipitation system, precipitation time. जब बारिशों का सीजन होगा तो at that time these streams will flow. Just जो कि एक तारीखी जुमला था, बारिश आता है तो पानी आता है। सो द एफिमरल स्ट्रीम एज वेल एज द इंटरमिटेंट स्ट्रीम, ये दोनों स्ट्रीम्स बारिशों के सीजन में इनमें पानी आएगा। लेकिन क्या डिफरेंस है? इंटरमिटेंट स्ट्रीम्स आर connected to groundwater, but the ephemeral streams are not connected to groundwater. Okay, so lesson. Okay, we were talking about the three types of streams in a desert: the perennial streams, ephemeral and intermittent stream. Perennial में पानी पूरा साल होता है and perennial are connected with groundwater. इसके अलावा ephemeral and intermittent flow during some parts of the year, especially in the rainy season. Or ephemeral are not connected with the groundwater system, while intermittent are connected with the groundwater system. वैसे दोनों more or less same है. So these are the three main types of fluvial systems in a desert. And if you remember the chapter title, it was aeolian processes and arid landscapes. So हम बात कर रहे हैं इस वक्त arid landscapes की. And you see this picture is showing water which is flowing in a desert. In a desert landscape. Okay, then deserts have a very common phenomenon which is called as flash flood. So this occurs when the ephemeral stream suddenly gets filled up due to heavy rain. And due to the rain, the
stream gets filled and it overflows. तो ये जनरली एक छोटा सा एक स्टॉर्म एपिसोड आता है जिसकी वजह से ये स्ट्रीम्स फुल हो जाती हैं और फिर इसके बाद ओवरफ्लो हो जाती हैं। अगर आप इस पिक्चर में देखें तो यू कैन लाइक यू हैव एन आइडिया कि ये जो स्ट्रीम यहाँ पे फ्लो कर रही है, इट डज़ नॉट हैव दैट मच डेप्थ। पिक्चर देखने से भी अंदाज़ा हो रहा है कि इतनी ज़्यादा डेप्थ नहीं है इस स्ट्रीम की। तो इसी वजह से फ्लैश फ्लड्स यहाँ पर डेजर्ट फ्लूवियल सिस्टम्स के अंदर फ्लैश फ्लड्स कॉमन है। ओके, व्हेन द desert stream is dry, at that time the dry stream or the dry channel is called as wash. It's called as wash, it's called as arroyo Spanish mein, and it's called as wadi in Arabic. So these are the same words. A dry stream in a desert landscape is a wash. Okay, in the desert debris flow is very common because सारी सैंड है, वहाँ पे मट्टी है, ड्राई सॉइल है, लूज मटेरियल है. सो वेन एवर द वाटर कम्स it flows along with the water. So that flow of mud, soil and rock fragments is named as debris flow. Okay, then within the fluvial network in a desert, we see there's another terminology, and that is playa. And playa is the dried salt crusts which remain after the evaporation of water. अगर आपको याद हो, सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ हमने पढ़ा था फिजिकल वेदरिंग के अंदर, जिसमें वाटर की इवेपोरेशन की वजह से पीछे ज़मीन पर या रॉक्स पे सॉल्ट क्रिस्टल्स रह जाते थे. सो इफ़ दोज सॉल्ट क्रिस्टल्स are in a desert floor or in a desert stream, then that feature is playa. और deserts में बहुत ज़्यादा arid climate है, dryness है, जिसकी वजह से these crystals are the crust of salts are in bigger number. That's why special terminology has been given. Then there is another feature which is called as alluvial fan. So alluvial fan is a fan-like formation at the end of a canyon. Canyon are hills or mountains which have steep sides. So when the water is flowing towards the side of a canyon, यानी किसी canyon के ऊपर कोई stream flow कर रही है, and that stream ultimately goes to the edge of the canyon and then it starts flowing डाउनवर्ड्स. बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि कोई वाटरफॉल हो, लेकिन वाटरफॉल के अंदर कंटिन्यूसली पानी फ्लो करता है, जबकि एलुवियल फैंस में सीजनल वाटर आता है. सो दैट water which flows from the edge of the canyon forms a fan-like structure at the base. जहाँ पर canyon का feature ख़त्म होगा, like here they have given the top view. So let's suppose this is a stream over here. Let me make my pointer prominent. Okay, so if you can trace out the movement of my pointer. This is a stream which is ephemeral. Ephemeral is a seasonal stream. एक खास सीजन में फ्लो करेगा,
बारिशों के बाद वो ड्राई हो जाएगा. सो व्हेन देयर इज वाटर इट फ्लोज थ्रू द एज ऑफ द कैनियन. ये कैनियन का एज है, इट्स फ्लोइंग डाउनवर्ड्स. तो कैनियन की बेस पर वाटर स्टार्ट्स स्प्रेडिंग in a fan like structure, and it has a lot of alluvium या sand particles उसके साथ होते हैं, and it starts forming fan like semicircular structure, and that is called as alluvial fan, and it is formed by the abrupt loss of velocity of an ephemeral stream. कोई ephemeral stream अपनी velocity को अचानक से खो दे. क्यों खो दे? क्योंकि वो एक ऊंची जगह से एकदम से नीचे वो स्ट्रीम गिर रही है. At that time, alluvial fans are formed. So here it is. The fan is produced whenever flowing water abruptly loses velocity as it leaves the constricted channel of the canyon. So a special slope is formed near at the alluvial fan, and those slopes are called as bajada, and that's the Spanish word for slope. So here you can see. So this, it is 15.22 D. Let me find out. So there we have these features. This is a slope which is formed over here, and that is a bajada, the Spanish word for slopes. This is a playa, the salt pan, and then this is bajada. You see, it's a slope, downslope area. Horst is the top part of the elevated part, and then uh, just at the base of these we have alluvial fans जब पानी circular direction में गिरे, and area between two horst is called as bolson, and the lower part of a bolson is called as graben. So horst and graben are the two terminologies, just like syncline and anticline. Anticline ऊपर, तो anticline की जगह horst, syncline की जगह graben. So these are the features, and here they have some real life examples. Yeah, so that's a playa. यहाँ पे crystal crust की formation है. Okay, let's go back to where we were discussing. I think we were here. Okay, we did Vajada, and now let's move on to the desert landscapes. We have just finished the fluvial systems in a desert. Now, the desert landscapes. So,
Desert are considered as wasteland, but they are not wasteland. So these are not wasteland. Rather, they have special adapted plants and animals. And the landscape is also beautiful. The desert landscape, especially with the traveling of the sand dunes, and then the type of vegetation it has, like the cactus and all. So these are not completely wasteland. But real wasteland are the badlands, which are semi arid regions. And these are the areas where any activity cannot be carried out because of the rugged topography. The land has, just bumps, and it's highly uneven. It has um, domes, and it has just a very rough texture, very rough structure. And this is the reason no cultivation can be carried out there. And the surface materials are weaker. So these areas are called as badland. In Pakistan, some of the areas in northern Punjab are also categorized as badland, जहाँ पर ज़मीन ज़्यादा उसमें एलिवेशन बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, और एक टेबल की ऊंचाई के बराबर उसमें पहाड़ियाँ और ज़मीन पे सुराख, फिर एक छोटी पहाड़ी, और it's highly uneven. So those are up till now considered as kind of waste, not completely waste, but those are bad land, not suitable for many activities. So these are some of the features formed by wind. So ye vent effects, oh, in the deserts. So that's excuse me for the disturbances today. And yeah, so the last so some remaining terminologies of this chapter includes Bolson, we have done already. It's a slope area between two adjacent ridges जिनके नाम horst थे, Horst, horst, and then playa, that's the central pan जिसमें salt crust होगा, then बिजाडा alluvial fan के साथ जो slope बना होता है, that is बिजाडा, and the pediment, it's the area which has thin coating of alluvium, यानी कि ये भी alluvial fan के पास ये feature आपको मिलेगा, where a thin coating or thin veneer of alluvium is found. So these are the things which we had to cover from chapter number 15, and that's the end of the